Now what it is given, an ox can apply a maximum force of 1000 Newton. Fine. So what they have stated like कि एक ऑक्स है और वो कितना फोर्स मैक्स टू मैक्स लगा पाता है 1000 न्यूटन. So force is given, just write down the values, 1000 Newton, right? Next thing, it is taking part in a kart race and is able to pull the cart at a constant speed. So speed is given as something 30 मीटर पर सेकेंड. आई होप दैट यू नो दैट कि हम स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं while making its best effort. So they have asked you to calculate the power. अच्छा, बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है. ओके, सो आई जस्ट शो यू हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला. लुक, पावर जो है ये वर्क डन अपॉन क्या होता है, टाइम होता है. फाइन. अभी वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है एंड दिस इज टाइम. तो हमने 9th स्टैंडर्ड में काइनेमेटिक्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला देखा था. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है ये मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है. अंडरस्टैंडिंग? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है. सो फोर्स टाइम्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा. दिस फार्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, लाइक मतलब हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में किया है ये फार्मूला. सो लुक, या चलो, विल सॉल्व इट, विल सी हाउ टू कम अप विद दिस. So they have asked you the power. Okay, power is like force times velocity. Force is given as 1000. You'll multiply by 30. Yes, it is that easy. So you'll be putting this as 3 followed by 1 2 3 4 zeros. You can replace that 3 0 by stating it as kilo. So ये मेरा 30. Now see what quantity you are dealing with, power. तो unit क्या आ जाएगा, watt आ जाएगा. Understanding? So I hope the solution is clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.